Great morning everyone. 10th class student, in the last video we have discussed about the structure of neurons. In this video I am going to discuss with you about the types of neuron, various types of neuron. Firstly, sensory neuron, motor neuron and the relay neuron. These three types of neurons we are going to discuss in detail. Sensory neuron, motor neuron and relay neuron. Sensory neuron. These neurons receive the signal from the sense organ. These sensory neuron क्या करता है? It help in receiving the signal, especially from the sense organ, and transmit it further. Detect करने के बाद information, it transmit into the central nervous system. Further transfer कर देता है from sense organ to the central nervous system. So this was about the sensory neuron. Sensory neuron का क्या function है? These neurons receive the signal from the sense organ and transmit into the central nervous system. Next is the motor neuron. Motor neuron. These neurons send the signal from the central nervous system to the other part of the body, like cells, muscles, organs, organ system. Various part of the body receive the signal from the central nervous system through the motor neuron. Sensory neuron ने क्या काम किया? Sense organ से central nervous system तक signal को transfer किया. These neurons receive the signal from the sense organ से central nervous system में pass कर दिया. Motor neuron ने क्या किया? Central nervous system से कहाँ pass कर दिया आगे? Cells, muscles, organ system. Next is the relay neuron. Relay neuron basically is the connection between the sensory neuron and the motor neuron. Sensory neuron और motor neuron को connect कर रहा है. Also, it builds the connection with the other neurons also. This motor neuron builds the connection with the other neurons also. So these are the three types of neurons. Now, it is very necessary to know some basic terms in this lesson, that is stimuli. First one, if I am talking about stimuli. Stimuli क्या होता है? Stimuli is the any change in our surrounding. हमारी surrounding में कोई भी change हो रहा है. The change in the environment to which living organism respond, और उसके लिए हम respond करेंगे, response देंगे उस change के लिए. That is called stimuli. Basically, stimuli is any change in our environment to which living organism responds accordingly. For example, heat, cold, sound, smell, taste, touch, pressure, gravity, water, etc. All these act as stimuli to our body. Living organism respond to stimuli in the form of body movements. किस फॉर्म में हम रिस्पॉन्स करेंगे अगेंस्ट दिस स्टिमुलाई? इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट. हमारी बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट होगी अगेंस्ट दिस स्टिमुलाई वेन एवर वी रिसीव दिस स्टिमुलाई. नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. मैनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी वर्क टुगेदर. आपको पता होगा हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन हैं, लाइक लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन. ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर. सभी के सभी ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे. द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. तभी ही तो रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर. मैनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी of an organism are working together in a proper manner to produce a proper response to that stimuli, to that external agent. That is called coordination, और उसी को ही बोलते हैं coordination. बेसिकली coordination से हमारा मतलब क्या है? हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का आपस में इकट्ठे मिलजुल कर काम करना and give a proper response towards any external agent. और जो भी external agent हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स करना. सो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की बॉडी में कैसे हो रहा है? इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. वी विल स्टडी टू सिस्टम इन आवर बॉडी, दैट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. नेक्स्ट वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम. Endocrine system is the hormonal system.
endocrine system, also known as hormonal system. So two systems in our body are working together in animal's body, that is nervous system and endocrine system. Next one is the in plants control and coordination is done by chemical substances. और plants की body में जो control and coordination हो रहा है, that is done with the help of hormones. That's why they are called plant hormones. और प्लांट हॉर्मोन्स का एक और नाम है, डैट इज फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं इसको. प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स. इन प्लांट्स द कोऑर्डिनेशन इज डन बाय दीज हॉर्मोन्स. नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. In animals, I told you the coordination takes place by nervous system, that is controlled by brain and spinal cord, and endocrine system. Basically endocrine system से हमारा मतलब है that is hormonal system. Nervous system जो हमारी body में है, that is consist of brain, spinal cord and many nerves are present in our nervous system. First one is brain, second one is spinal cord, and third one many nerves are present in our nervous system. We will study all this topic in detail in further videos. Next I am telling you about the receptors. Receptors are the sense organ. Receptors क्या हैं? Receptors basically are the sense organ which receive the stimuli. जो हमारे आसपास सराउंडिंग में एक्सटर्नल एजेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, दैट एक्ट एज स्टिमुलाई. वो ये उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स रिसीव करेगा एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन. उसके बाद मैसेज देगा ब्रेन को और स्पाइनल कोड को थ्रू द सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन. Sensory nerves are present in our sense organ. So basically there are 5 type of receptor. Photoreceptor are present in our eyes to detect the light. Phonoreceptor are present in our ears to detect the sound. Olfactory receptor nose में present है to detect the smell. Gustatory receptor in the tongue to detect the taste. And tangoreceptor are present in our skin to detect the touch. तो बेसिकली इसमें आपने लर्न करना है व्हाट आर रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स होते क्या हैं? रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलाई एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन. उसके बाद वो कहाँ मैसेज पास करना है? ब्रेन के पास. एंड दे कैरी द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व. और ये मैसेज कैसे कैसे कैरी कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स. फर्दर वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.